Hello guys, I am Mrs. Sarla. In last revisionary video, I discussed insight theory of learning. To continue the last video, I am going to revise you learning theory by Gane. His full name was Robert M. Gane, means Robert Mills Gane. He was an American educational psychologist. He is the best known for his book Conditions of Learning. Actually, he talked about both behaviorism and cognitivism. मीन्स ये behaviorism और cognitivism की मिक्सअप बात करते हैं. मतलब इनकी थ्योरी दोनों की ही थ्योरीज का मिडवे है. In first 4 points, he talked about the behavioral aspect and others connected with cognitivism. He said that learning is cumulative human intellectual development, which is the building of increasing complex structures of human capabilities. ये learning को cumulative बताते हैं, means in his hierarchy of learning the complexity increase होती जाएगी. जब basic से सीखना शुरू करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं तो learning complex होती जाएगी. means इनकी hierarchy simple to complex की तरफ चलती है, bottom to above चलती है. He believed that learning cannot be described on the basis of general principles. It can be done on the basis of observation of the situation in which learning take place. Means पूरी situation को जब observe करके हम कुछ सीखते हैं जिसमें हमारे brain का भी use होता है, वो learning stable learning होती है. Means his philosophy of learning is dependent upon both internal and external process. As to him, learning is a process that takes place inside an individual's brain. For Gane, learning is a progressive process which always progresses in a hierarchical order. To learn higher order and new material, the learner will rely on previously learned capabilities. Means आगे जब हम बढ़ते जाएंगे, प्रोग्रेस होती जाएगी, तो उसमें जो हमारा इंक्रीजेस हो रहा है या प्रोग्रेस हो रही है, वो प्रीवियसली लर्न कैपेबिलिटीज को रिलाय करेगी. उसको मतलब वो पहले का एक स्टेप चढ़ना, वो सीढ़ी चढ़ना, उसको वो जरूरी है. And acquiring the new material. Following are the 8 conditions of learning given by Gane, organized in a hierarchy according to complexity. The lowest 4 conditions focus on the more behavioral aspects of learning, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, while the highest 4 conditions focus on the cognitive aspects. It means it is a midway of behaviorism and cognitivism. Gane की जो 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग है, डेट इज सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, चेनिंग लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब इसको ठीक से हम वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट आता है सिग्नल लर्निंग. This is the simplest form of learning and consists essentially of the classical conditioning first described by the behavioral psychologist Pavlov. मीन्स ये लर्निंग का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है. हमें किसी चीज का कोई सिग्नल मिलता है और हम सीख जाते हैं उस सिग्नल से कि हमें ये संदेश दिया जा रहा है या हमको ये करना है. दिस इज द लोएस्ट लेवल इन Gane's hierarchy of learning. The individual learns only through signals and gives response. It is similar to the classical conditioning theory of Pavlov. For example, when we eat golgappas, हम जब गोलगप्पे खाते हैं, we start salivating. That is natural response. But when an artificial stimulus is paired with that, means any type of sound, any bell, we respond the same as in the experiment of Pavlov. The next one is stimulus response learning. This is also known as operant conditioning. Was originally developed by Skinner. Stimulus response learning is all about
getting a response to a stimuli. Means जो ये सेकंड टाइप ऑफ लर्निंग है गैने का, वो थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर लर्निंग और स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग से मिलता जुलता है. In this type, positive motivation is helpful in removing the phobias in the children. Means जब positive motivation देते हैं, अब वो motivation as a reinforcement भी हो सकता है, as a reward भी हो सकता है, तो बच्चों की लर्निंग थोड़ी सी अच्छी और स्टेबल होती है. It is based on Skinner's operant conditioning and Thorndike's trial and error theory. इसमें मोटिवेशन का और या रीइंफोर्समेंट का रोल होता है टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द रिस्पॉन्स. द नेक्स्ट वन इज चेन लर्निंग. This is a more advanced form of learning in which the subject develops ability to connect two or more previously learned stimuli response bonds into a linked sequence. एक चेन में, एक सीक्वेंस में जो हमने पहले सीखा है फर्स्ट 2 स्टेप्स, उनका जो बॉन्ड बनता है उस सीक्वेंस में हम उस लर्निंग को सीखते हैं. Chaining is the connection of a set of individual stimulus response in sequence. Once the individual is completely aware of the signal and stimulus response learning, he or she proceeds towards chain learning. जब हम 1 से 8 तक आगे बढ़ते जाएंगे, हर एक स्टेप पिछले वाले से एडवांस्ड रहेगा. In this signal and SR बॉन्ड एक सीक्वेंस में तब आ जाएगा. एज व्हेन अ स्मॉल गर्ल चाइल्ड बाय अ डॉल, एक डॉल अगर खरीदती है, फर्स्ट रिप्रेजेंट इट एज अ बेबी, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करती है जैसे वो उसका बेबी हो. देन ड्रेसेस अप द डॉल, डज मेकअप द डॉल एंड देन फीड्स द डॉल. एक चेन में उसका उस तरह से वो टेक केयर करती है. द नेक्स्ट वन इज वर्बल एसोसिएशन लर्निंग. This is a form of chaining in which the links between the items being connected are verbal in nature. It is a fourth type of learning according to Gaine. It is a process of chaining in which associations are made using verbal connections. जो चेनिंग की गई है, अब वर्बली वो चीजें बताई जा रही हैं. It is helpful in developing the language skill. The next one is discriminative learning. This involves developing the ability to make different responses to a series of similar stimuli that differ in a systematic way. According to Gaine, the most important aspect of learning is the individual's ability to discriminate stimuli. किस तरह से वो वातावरण में आए हुए different stimulus को discriminate करता है. Higher cognitive process is used in this type of learning. The individual becomes capable of making different responses to different stimuli. For example, in multiple choice test, student has to select the right answer from the various related alternative. Child learns to discriminate between colors, parts of bodies, size, structure, etc. It requires higher cognitive processes. The next one is concept learning. This involves developing the ability to make a consistent response to different stimuli that form a common class or category of some sort. Means इस टाइप के लर्निंग में चाइल्ड कैटेगराइज करना सीख जाता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस कैटेगरी में आ रहा है. Gaine has described in this type of learning, knowledge of discrimination learning is important. The learner acquires a capability of making generalization. पहले कैपेबिलिटी होती है चीजों को जनरलाइज करने की, एंड गिविंग अ कॉमन रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ क्लासेस और कैटेगरीज एज मेल एंड फीमेल, लिविंग एंड नॉन लिविंग. For example, while driving a car, one must start with clutch.
gear and then slowly release the clutch and raise the accelerator. This is an example of concept learning. The next one is rule or principle learning. A principle is a chain of two more concepts. In principle learning, one needs to associate more than one concept. For this learning, knowledge of concept learning is very essential. It is a most important type of learning described by Gane. Without knowledge of concept, learning cannot take place. It refers the formation of a chain of two or more concepts. Knowing the rule implies that the learner is being able to demonstrate a बिहेवियर मीन्स जब एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट हमारे बन गए हैं, क्लियर हो गए हैं, तो वह मिलकर एक रूल या प्रिंसिपल बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन एयर फिल्ड बॉल इज किक्ड, उसको जब किक किया जाता है, इट फ्लाइज, रोल्स एंड रिवॉल्व टू. तो ये एक कॉमन रूल बन जाता है कि इसमें फ्लाइंग भी है, इसमें रोलिंग भी है, इसमें रिवॉल्विंग एक्सेट्रा आर लर्न बाय द चिल्ड्रन. Now the last one is the most important type of learning, problem solving. This is the highest level of cognitive process. It involves developing the ability to invent a complex rule, algorithm for the purpose of solving the problem. Means it is an extension of rule learning. Problem solving requires internal events in an individual to think and combines two or more rules to produce a new capability, resulting the formation of learning strategies termed as a higher order rule. जब हम टू और मोर रूल ऐसे सीख जाते हैं तो हम एक हायर लेवल की लर्निंग सीख जाते हैं. हम किसी भी प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से देखते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं. तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है. दो या दो से अधिक नियमों का जब समन्वय करते हैं किसी नई समस्या का समाधान खोजने के लिए. दिस इज द टाइम व्हेन अ चाइल्ड लर्न टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. सो वी कैन कंक्लूड दैट फ्रॉम सिंपल टू higher order learning, the child must go through all types of learning in hierarchy order. For effective learning, a teacher should teach students the skills of problem solving especially, which is the important part of this theory.